our ever-inspiring coordinator, Ms. Suvenu Sharma, and all the parents present here today. Now I would like to invite our coordinator, Ms. Suvenu Sharma, to felicitate our respected principal sir, Mr. Rajiv Srivastava, in honor of his special leave to the prayer, seeking blessings for a successful and joyful celebration. Yes, dear, let us take a moment to remember God, who made the earth, the sky, the animals, the flowers, and the trees. Today, we are presenting a story filled with magical moments and enchanting experiences. Snow White and the Seven Dwarfs. It's a beautiful tale about a kind and gentle girl who loses her mother and embarks on a journey that takes us to lands far and wide. Along the way, she meets fascinating characters, some kind, some wicked, and learns the true power of love, courage, and friendship. Today, our little stars are all set to bring this story to life on stage with the cheerful songs, graceful dances, and lively performances. So sit back, relax, and get ready to be transported into a world of magic, music, laughter, play, and joy as our entire class showcases their talent and hard work. With smile on our face, with love in our hearts.
wish I had a baby, skin as white as snow, lips as red as blood, and hair as black as a bone. It would be a blessing to have a child as beautiful as the winter landscape. My dear, what are you thinking about? My dear, what are you thinking about? I was just wishing for our baby to be beautiful like the snow outside. Our child will be beautiful no matter what they look like. They will have your heart and my love. I hope my child will be kind and gentle like the snowflakes that fall gently from the sky. The queen's wish came true. She had a beautiful baby named Snow White. Our daughter is beautiful. She is going to be a wonderful person. But my joy is mixed with sadness. Your mother was a wonderful queen and she is no longer with us. My child, you need a mother love and care. I hope this new marriage will bring happiness to my child. Snow White's new mother was very beautiful and loved only herself. She wanted to be the most beautiful woman in the world. The new queen paid no attention to Snow White, who grew more lovely every day. She hated her pretty daughter Snow White because everyone else in the kingdom loved her so much. Why does everyone like Snow White? She's not the ugly. The queen wanted to be the most beautiful in whole kingdom. She had a magic mirror and every day she asked the same question. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? You are my queen. You are the prettiest in the land. I am asking again. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Snow White is twice as pretty as you. No, that's not true. I am asking again. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Snow White. The huntsman entered and bowed before the queen. Their hearts were beating fast. They knew the queen was cruel. There is one thing can be done. Snow White must be killed. Huntsman? Yes, your majesty. I order you to take Snow White, take me to the forest and kill her. And bring her heart that I know you done what I asked. Yes, your majesty. साइड से कैसे बनाएंगे
Please, huntsman, don't hurt me. I'm sorry, princess, but the wind queen has ordered me to kill you. I must obey. But why? I have never done anything to her. She is jealous of beauty, Snow White. The huntsman has an idea. You took your knife away. Oh, I have idea. You must run far, far away. And I will tell the queen I have killed you. And then you will be safe. Oh, thank you. Thank you for letting me go. The huntsman killed a white pig and brought its head to the Fairy Queen, who believed he had killed Snow White. Snow White walked far into the woods. Oh, I'm so tired. I need a place to rest. Snow White soon came across a small cottage. It was empty, but there were 7 small beds inside. Snow White waited to see if anyone could enter. She asked for shelter. She was so tired she fell asleep. While Snow White slept, the cottage door opened and 7 dwarfs trooped in. They each lit a candle and looked surprised. Who's been in our cottage? Who is visiting all my child? Who drank my milk? Who ate my bread? Who ate my honey? Who tried my bed? Who's on my bed? Who is she? Hurry up, where is everything? Her skin is white as snow. Her lips are red as blood. Is it some children? Who are you? I am back. I am dog. I am grumpy. Achoo, achoo. I am sneaky. Achoo, achoo, achoo. I am sleepy. I am loopy. I am happy. Who are you? Who are you? I am sorry. I came without asking. The queen, my stepmother, wants to hurt me. I ran away and I was tired. I saw your cottage and thought it was a safe place to rest. What a horrible queen! Oh heavens, you can stay in the Snow White. Please stay with the Snow White. You will be safe here. Now you wash the dishes.
sure she had one. At last, no one will ever call Snow White fairies again. But when the dwarf came home, they put out the gum and Snow White walked up again. She's alright. Snow White, that was the second time. The queen has come here to kill you. She will try again. You must promise us that you will not let anyone into the house. I promise. The next day, the queen stood before her magic mirror again. My queen, I know it's hard to hear, but Snow White is a fairest. That is pretty clear. The queen flew into such a rage. She almost broke the mirror. All right, enough. I will not be kind anymore. No more Miss Nice Queen. The queen's final plan was the cruelest yet. She disguised herself once more and headed to the Dwarfs' cottage. Good morning, beautiful girl. Would you like to share my apple? Dad, look, the nurses. But no, someone is trying to hurt me and I can't talk to strangers. You are a wise child. But what if we both eat the apple? Then you know what's it. I will pass it to you. That should be alright. Take you, kind lady. Snow White, they know that only half the apple was poisoned. When she took a bite, she fell to the ground as if dead. Ha 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 ha! Finally, Snow White is dead. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha ha! The doors are heartbroken. They placed Snow White in glass box. They brought us stars every day. One day a prince rode by. What a beautiful girl! Why is she lying in this glass box? Can I help? Her name is Snow White. We don't know if she is dead, but we have not been able to wake her. My dogs are the best in the kingdom. Let's take her down the mountain and get help.
Okay. Thank you. It's always a very dull moment to listen to principal's speech after such a beautiful performance. It's also a present for me to address you because it's a micro event. You get more time with the kids also and the parents also. We are trying to focus in this school on more small events where students have better representation. Theatre is one form, nothing can compete in improving your personality. Teamwork, being on this stage, facing an audience. And I'm always surprised that the little kids can hold on to the mic for longer, memorize sentences, come and face you, deliver their dialogues, and also work in comradeship together. The usual line goes, when the baby is born, my prince is so smart, my angel is so pretty. I can say, my witches are so smart. I've been watching them a few days also, they are really very good. My princess are so smart as well, so the angels, all the characters there, to make up this beautiful story. And it's always memorable to live the stories that you read in your books yourself. It might look a very small moment for us, but as I say, and I communicate to parents, most of your habits, your tendencies, your personality is built within these years only. If you look back your life, you carry all your habits from very small. It's very difficult to change. So this is not a small age, it's the most critical case they have. And I congratulate Suvenu ma'am, entire team that has been there, grooming these kids. And I also touch upon one small paragraph which I am trying to communicate to the parents. Usually living under so much pressure and stress, especially in metropolitan cities, we always talk about true self-realization, self-sufficiency, self-importance. But what has happened, somehow it has become our alphabets have changed. So it's now A stands for I, B for me, and C for myself. Unfortunately, we are social animals. Unless the environments are good, unless the people around you are good, unless the community is strong, you can't have peace. You can't have anything. And kids only learn when they fall. You can't stop them from falling. Don't do that. Be around them to help them out, but let them stand on their own. That's a life lesson. They fight, they argue, and they also work together. So this plays a beautiful example of how they can work together, which we adults can't. Half my time, half my life is spent in settling parental disputes, one kid fight with another. So as long as we start treating all the kids as our own, I think half our problems will also be resolved. And I can't say I know most of these kids personally also, they look so beautiful today. Forget all the three. Thank you, congratulations, and we're looking for more such events where we can.
much, Abhi. How was the show? Amazing. Thank you so much. We tried to make it more dramatic, just like children, they do it at home. We just portrayed their true talent on the stage. जैसे मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, आज स्कूल ले जाना, ये नहीं खा सकता. हमने बोला सारा ड्रामा स्टेज पे दिखाना. The more you show the how, that's how you grow. Thank you so much for being here. But before thanking you to be a part of this event, I would like to say thank you to all fantastic team of my teachers, dancers, Pranamika ma'am, Deepti ma'am, my class 2 teacher, Sheena ma'am, for all the decor that you see, all the magic that you see all around. Thank you ma'am, thank you sir for, non-stoppable support that we get. Anything that we walk up with new ideas, even at the last moment. अगर आप बैठे होते और तभी मैं जाके बोलती ऐसे करें तो बोलते चलो करके देखते हैं. So that's the spirit that we have in us. We try to deliver the same in our kids. And thank you so much to everyone and all present here. Thank you so much. Can we all give a huge round of applause for Rockstar? Thank you. And dear friends, thank you for being here today. Your presence fills this gathering with warmth and joy. And once again, let's celebrate the young stars with a big round of applause for their brilliant performances. Thank you. Please be seated. Can you see the little ones going around? And can we just send them with that thundering sound of clap? Chandraji. Continue to clap until they leave the stage. Thank you so much. अब जाके मुझे सांस आई है. बच्चों को ये करके सिखाना कि आपको जाके माइक पे एडजस्ट करना है. I was spellbound. I tell you, we being someone जिन्होंने हमने ये प्रैक्टिस कब की देखी है, कुछ चीजें ऑन स्पॉट थी. आपको पता है हमने वो डिसाइड भी नहीं किया था कि आपने कहाँ आना है. किसी किसी की जगह हो जाता है, on the actual day something, the props are kept somewhere else, the mics which were supposed to be kept somewhere else, now it is on the day kept somewhere else. But I'm spellbound. My heart is filled with so much of pride seeing my children so confident on the stage. आप मत करिए, मैं बहुत जोर से क्लैप करूँगी. I'm so happy for this. Thank you. तो जब तक हमारे बच्चे क्लास में वापस गए हैं और वो जाकर रेडी होते हैं to be handed over to you, आपको 10 मिनट सुवेनु मैम को झेलना पड़ेगा. तो beginning with, as I always say, जब आप हमारे पास आएंगे, मैं बिना कुछ सिखाए तो आपको भेजूंगी नहीं, right? So first of all, please don't move out of the hall. As the whole school is working and we have multiple events today in the school. School is working, the practices are on, we had our show. There's another show which is happening in the Junior Assembly Hall, if you remember. Have you ever been there? So, probably the old parents, अगर हमने कभी कोई KG ने कोई show वहाँ किया हो तो उनको पता होगा वहाँ एक और show हो रहा है. So that's what I would like to request you, that this is the area which is being given to us. So once our kids are out in this in that premise, I will let you know, so that one by one, class-wise class you can go, you can get your child and उसके बाद आस्ता लविस्ता हो जाएंगे. ठीक है? Thank you so much. So before we leave, there is few points of consideration which were being given to me by class 2 teachers, and they requested me to just let you know, क्योंकि आगे 4 महीने के बाद ना आपकी नींद उड़ने वाली है. उसका रीजन मैं बताती हूँ. अभी तक हमारे बच्चे सिर्फ एक टीचर के पास थे, है ना? एक मैसेज लगता था, चाहे वानी मैम को, चाहे सुवेनु मैम को, या सपना मैम को, या तान्या मैम को, या नवनीत मैम को, मैम इसकी बॉटल घर नहीं आई, मैम इसका आई कार्ड आज कहीं गिर गया, मैम ये हो गया, मैम वो हो गया. क्लास 3 में
थोड़ा सा मुश्किल होगा. Why? Because there's not only one teacher who will be handling your child. There will be multiple subject teachers. कल्चरल आर्ट बहुत सारी चीजों में आपके टीचर्स हो जाएंगे. सो यू विल गो बॉन्कर्स. कई बार ऐसा भी होगा कि फ्राइडे को इंग्लिश टीचर ने भी टेस्ट दे दिया, इंग्लिश टीचर ने भी टेस्ट दे दिया, तो आपको लगेगा अरे ये क्या है, एक दिन पे दो टेस्ट है ना. बिकॉज दैट्स व्हाट द स्किल दैट वी वांट आवर चिल्ड्रन टू इम्बाइब इन देम. There's one thing very simple, मैं कोशिश करूंगी जितनी आसानी से आपके सामने उतार सकूं उतार दूं. आज आप भी तो मल्टीटास्किंग करते हैं ना, राइट? ऑफिस भी जाते हैं, आते हुए सब्जियां भी ले आते हैं, वो तो कई बार ब्लिंकिट से भी आ जाती है. दैट डजंट मीन, बट द वुमेन, इफ आई टॉक अबाउट द मेन, आई टॉक अबाउट, कई बार होता है यू आर नॉट इन अ गुड मूड, बट देन यू हैव टू प्रिटेंड टू बी इन अ गुड मूड व्हेन यू आर इन द हाउस, राइट? यू हैव टू पुट अप अ स्माइल ऑन योर फेस नो मैटर व्हाट thundering is going on inside you. You have to just be intact and quiet and calm. Can't we teach our kids right now? है ना? This is their world. जैसे हम अपने अपने वर्ल्ड में झगड़े हो रहे हैं ना, हम बैलेंस कर रहे हैं ना. मुझे आदत है सुबह चाय पीने की, जब तक चाय नहीं मिलती है, जब तक कॉफी नहीं मिलती, तब तक मेरी सुबह नहीं होती. बट कई बार ऐसा सूरज भी उगता है जब आपको सुबह एक कप कॉफी नहीं मिलती है. एंड देन हाउ यू गोज ऑन, राइट? सो दिस इज देयर वर्ल्ड. ये दुनिया उनकी है. जैसे आप अपना बच्चा बस में बिठाते हैं, उनकी दुनिया शुरू हो जाती है. उसके बाद वो कैसे डील कर रहे हैं, क्या हैंडल कर रहे हैं, कैसे ले पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है. As parents, we have to be there at the back of them so that they come and they at least discuss with us. But don't you think that these stupid things, इसने मुझे ना, मेरा पार्टनर ना मुझे तंग करता है, या इस बच्चे ने ना मुझे ऐसे धक्का दिया था, और हमको एक सेकंड लगता है फटाफट क्लास टीचर को बताने में कि मेरे बच्चे को ना ऐसे देख लिया, आप प्लीज देख लीजिए मेरे बच्चे को ऐसे किसी ने हिट किया. आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट इन्फॉर्म द टीचर, यू शुड, बट कभी कभी जहां आपको लगे वहां वो अपने बच्चे पे छोड़ दीजिए. उसको बोलिए कि आपको अच्छा नहीं लगता ना अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आस्क देम, टॉक टू देम, व्हाट डू यू थिंक यू शुड डू. फिर आप बोलते हैं अच्छा टीचर को बता दो. बच्चा ऐसे बोलता है मैम को मैं बताता हूँ पर मैम सुनती नहीं है. बोलते हैं ना बच्चे कई बार ऐसे. तो दैट्स व्हाट समटाइम्स वी लेट देम हैव देयर ओन बैटल. आप देखो ना कुछ सालों बाद या आज भी कभी कभी टीचर नहीं होगी, दीदी नहीं होगी, मम्मा नहीं होगी, बड़ा भाई बड़ी बहन नहीं होंगे, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? उस एंजाइटी से या उस फीलिंग से निकल ही नहीं पाएंगे. इवन टुडे एट टाइम्स मेरे साथ भी होता है. सुबह सुबह मुझे पता है मेरा ब्लड प्रेशर अगर चेक करवा लेती हूँ, मैं मेडिकल रूम जाके पता नहीं कहाँ पहुँचा हुआ था. बट देन आई हैव टू टेल माय सेल्फ calm, cool down, everything is going to happen, keep the smile on, right? This is what we have to teach children. बुखार हो, तबीयत ठीक ना हो, फिर भी बच्चों को स्ट्राइव कि आपको करना है, आपको करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डू इट. ट्राई तो करके देखो, इजी होता है. ट्राई तो करके देखो, इजी होता है. आप जैसे एक बार ये बोलोगे ना, बिलीव टू मी, बच्चों को सर्द गरम ठंडा नमक ज्यादा मीठा नहीं समझ आता अगर हम उनके बारे में नहीं जानते. आजकल तो मैं बहुत सरप्राइज होती हूँ, बच्चे बोलते हैं हम बोर हो रहे हैं. मैम आई एम गेटिंग बोर्ड. अभी मैंने बोर्ड पे काम लिखा है बेबी, कॉपी डाउन. धीरे-धीरे कोई फिर मैम आई एम गेटिंग बोर्ड. सो दिस वन सेंटेंस दैट आई से, आर यू एन इंटरेस्टिंग पर्सन और अ बोरिंग पर्सन? So child says, I am interesting. But then interesting people never get bored. Take out the book, read, observe the class, see, try it out. Who needs your help in the class? आप walk करके देखो क्लास में, किसी को आपकी जरूरत तो नहीं है. आपको क्लास में कुछ अरेंज करने की जरूरत तो नहीं है. So there are so many things to think, to watch, to observe. How can a 5, 6, 7, 8, 30, 40, 50-year-old, 60, 80-year-old person can say, 80-year-old बोल सकते हैं क्योंकि वो थोड़े movable नहीं होते हैं. I can understand they have history, but until you have all your control of the body, how can you say I'm getting bored? Never ever. Don't ever entertain this from your child. हम बोलते हैं बच्चे बोलते हैं मम्मा फोन दे दो मैं बोर हो रहा हूँ. Please don't do it. One thing more that I have to tell you, how the children, those who are watching reels, especially on the phone, how are they impacting their brain? Many of you don't know. As I'm learning psychology, I've learned this and I was shocked to hear. How reels, the moment that they scroll, okay? Every reel has a different emotion, है ना? Different emotions. Some reels are happy, some reels are sad, some are violent, some are, kind of, they should not be watching, kind of, those things. So in every 30 seconds, their emotions are getting changed. तो उनकी बॉडी का जो इम्पल्सिव सिस्टम होता है ना, वो बंद हो जाता है. अब क्योंकि उनको इमोशंस रैम्पेंटली चेंज हो रहे थे उनके ब्रेन में,
अब उनकी बॉडी के सिस्टम को ही नहीं पता कि अभी इस टाइम पे मुझे कितना इमोशन, कितनी प्रचुर मात्रा में निकालना है। जैसे अगर मैं गुस्सा हूँ, if I'm putting up my hand and leg and मामा मुझे ये चाहिए, मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं पता उसकी, क्योंकि मेरी ब्रेन की impulsiveness में स्विच ऑफ हो गई है। Am I making sense? Yes. That is why it's happening कि बच्चे आजकल ऐसे हो जाते हैं, आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो, आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, मुझे ये खाना था। You know why they are putting up so much of aggression, so much of इतनी इंटेंसिटी उनके इमोशन में कहाँ से आई? आप कभी आप बोल सकते हो अपनी मम्मी से ये हवा में उड़ता हुआ चाटा आता, राइट? उनके इमोशंस में इतनी इंटेंसिटी कैसे आ रही है? क्योंकि उनका ब्रेन जो है, उनका इम्पल्सिव का स्विच बंद हो गया। उनके ब्रेन को ये पता ही नहीं है कि how to react and how much to react. And this is happening with the video games, with the screen time that we are giving to them. Okay, you can search on Google. There are some cartoons, some games which help them to soothe their impulsiveness, their brain system, their everything. You can let them watch that instead of they know all the मुझे नहीं पता होते हैं। अभी दिवाली की पार्टी करते हैं हम, तो I ask children of which song do you want to dance? मैंने नाम नहीं सुने उन गानों के, उन गानों को गाने बताते हैं and sometimes I get shocked। ये गाना कब आया? अरे सिंगर के नाम भी बताते हैं, like I don't know, someone Guru Randhawa and something, वो सिंगर के नाम भी बताते हैं, इसका गाना है, ये वाला गाना चलाओ। So that's how they are getting so much exposed, which is good at times, but not good many at times. So please keep a control. हमेशा एक बात को याद रखना। कई बार हम ये बोलते हैं कि सुनता ही नहीं है, सुनती नहीं है। जब ऐसा मन में आए ना, तब याद रखना, I am the parent. If I can get you in this world, if I can give you to eat, I can send you to school to study, I can decide what to wear, how to do, I can decide how to behave, when to do what, right? तो जब आप ये सोचेंगे बेटा मम्मा तो मैं ही हूँ, ऐसा है चलेगी मेरी, समझ आ गई? तो बच्चे को कुछ महीनों बाद, सालों बाद पता चल जाएगा। वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, उसको बोलेगा मम्मा सुनती है, खत्म, है right? So just be this much assertive, sweet, polite and assertive. That's what we want. Coming back to academics, please emphasis more on reading, handwriting and studying, क्योंकि क्लास 3 में bang on होने वाला है। क्योंकि वहाँ पर मैं बता की प्रॉब्लम क्या आती है, हम अभी अपने बच्चों को देते हैं एक ही क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर ही आंसर लिखना होता है, राइट? 3 में नहीं होता है। 3 में क्वेश्चन पेपर अलग आता है, आंसर शीट अलग आती है। तो कई बार तो बच्चे कितने नंबर का छोड़ आते हैं, क्योंकि उधर से उधर समझ रहे, पेजेस स्विच करने में क्वेश्चन स्विच हो जाते हैं। So when you move towards your winter breaks, January, February, March जैसे ही आएगा, अपने बच्चों को ऐसी प्रैक्टिस देना है that you give them a sheet and give them another notebook कि इससे देखकर इसमें लिखो, है ना? And tell them कि आप क्वेश्चन जो आपने कर लिए वो टिक कर सकते हो, that's what we used to do, है ना? हमारे मामा पापा भी यही तो बोलते थे कि जो क्वेश्चन कर लिया बेटा उसको टिक लगा देना, और this is how we have to train. Please put more emphasis on reading. Reading gives you wings. It is as simple as that. आप पढ़ेंगे नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, तो यहाँ से कैसे निकलेगा? The one who reads is a good speaker. The one who reads has good thoughts. The one who reads has more knowledge. The one who reads knows so much good vocabulary. The one who reads more logics. The one who reads need more answers. आज हम बच्चों को कोई एक वो देते हैं कुछ भी पैराग्राफ लिखने के लिए, बच्चे फटाक, उनको भी पता है फोन में चैट जीपीटी है, वो फटाक से निकाल लेते हैं। पर जो रीड करते हैं उनको लगता है 4-5, आप बोलो कैन आई हेल्प यू आउट, डोंट वरी, यू नीड टू राइट 10 लाइन्स, आई गिव यू 5, यू थिंक 5, आप भी तो बताओ 5, है ना? पर इससे क्या होगा, इससे ना दे विल बी मोर डिपेंडेंट on the gadgets that are around. There was one comedy show which I was listening, उन्होंने बोला कि it will be so easy for us to take the world back from the young generation, है ना? वो फोन ले लो, चैट जीपीटी ले लो, सब कुछ ले लो, तो इनका वर्ल्ड खत्म हो जाएगा and deal with the winners like that. So tell them to write 10 lines on any topic. My favorite toy, then my favorite room, the color of my room should be like this, my mother, my friend, my favorite park, my favorite vacation,
my favorite dress, anything, any rampant thing. If I have to go on a vacation, which place it could be, where I would like to go, any random thought, and just tell them to write 5 lines, 8 lines, 10 lines. So writing, reading, please should be there. Almanacs, colors रोज भेजा करिए प्लीज. मुझे टीचर्स बोलते हैं मैम कितने सारे बच्चे होते हैं कभी लेकर डायरी नहीं लेकर आते. Diary is a kind of a mode of communication between us, right? Let me tell you, I guess there is some ambiguity in understanding. Teachers don't use phones in the school. Teachers, okay, there are few authoritative people, those who have authority to use the phones. Okay, like HODs, few of the HODs, like coordinators, principal, PAs, and the admin staff. Teachers, वो खुद भी वो बेचारे कर भी नहीं पाते हैं. अगर हम उनको अलाउ भी कर देंगे तो भी वो नहीं कर पाते हैं टाइम्स, क्योंकि आपके घर में एक बच्चा होता है, आप कितनी देर तक कभी कभार फोन नहीं देख पाते हैं. बोलते हैं ना मैं इसमें बिजी थी. हमारे पास 25-30 किड्स हैं, तो कई बार तो होश ही नहीं होता है अगर बज भी रहा होता है. तो प्लीज अवॉइड टेक्सटिंग, मैसेजिंग, एनीथिंग ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स. Even if you're doing, don't expect that you'll get a reward back. कई बार अगर टीचर्स को आपको अप्रोच करना भी होता है तो वो मेरे से पूछ के कि मैम आई नीड टू मेक अ कॉल, ऐसे करके उन पेरेंट्स को मुझे ये बोलना है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, जो भी है, देन दे टॉक टू मी, आई से यस, देन दे डू इट. In case if you get any calls during the school hours, this is how they do it. Okay, please avoid texting them anything. You have the school reception number. उनको बोलो वहाँ से मैसेज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? Because yesterday I got a call from day before yesterday. I don't remember, 2-3 days back. I got a call. Hello ma'am. मेरे स्पेक्स मेरे बच्चे के बैग में रह गए. I said, wow, बच्चे का नाम प्लीज, क्लास थी प्लीज, कोई और क्लास थी, कोई और बच्चा था. मैंने कहा मैम आप ना एक बार रिसेप्शन पे फोन कर दीजिए and we'll try to figure it out. So that's what that used to happen. I know these are all funny things and we enjoy it, but just क्योंकि आप अगर पैनिक हो रहे हो और सामने से कोई हंस दे, I don't feel it good. तो मुझे फोन करके बहुत हंसी पड़ी है. मैंने कहा पहले तो बच्चा लेकर आओ, मेरे पास कौन सा बच्चा है, ये कौन सी क्लास का है, मम्मा के स्पेक्स अपने बैग में क्यों रखा हुआ है. So all these things happens. Okay, reading, tables and writings. Please put more emphasis on this. Tables. अच्छा हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम टेबल्स क्यों लर्न कराएं बच्चे को, हम ट्रिक्स सिखा देते हैं. कुछ चीजें ना याद करनी बहुत जरूरी होती है. उसका कारण मैं आपको बता रही हूँ. जब भी हम याद करते हैं ना चीजों को, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स खुलते हैं. यू नो व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग देम. आप एक हाथ को कुछ टाइम के लिए ज्यादा यूज करिए, आप देखेंगे ये हाथ ज्यादा एफिशिएंट हो गया है ना. कैसे? विद द प्रैक्टिस. सेम हैपेंस विद द नर्व्स ऑफ आवर ब्रेन. हमने उनको याद करने में इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया कि हमारा ब्रेन ऐसा है कि अब पता है हमारी किसी को बोलते हैं ना आपकी फोटोजेनिक मेमोरी है. कैसे बोलते हैं? उनके ब्रेन की न्यूरॉन्स के साइज कैसे बढ़े? प्रोबब्ली क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया होगा उसके ऊपर. ईदर दे आर गॉड गिफ्टेड और दे हैव वर्कड अ लॉट ऑन देम. सो दैट्स हाउ लेट देम लर्न. कई बार हमारे मन में ये भी आता है कि अल्फा बीटा गामा पाइथागोरस थ्योरम इतनी पढ़ा देते हैं, मैं किचन में रोटियां बनाते कहाँ याद कर रही हूँ ये भी आता है ना कि बचपन में जो पढ़ाते हैं यूज कहाँ कर रहे हैं हम, ये भी आता है माइंड में. मैं आपको बताती हूँ. सुवेनु मैम विल गिव यू द आंसर कि जो बचपन में पढ़ा था वो कहाँ इस्तेमाल होता है. बचपन में जो छोटी छोटी डिफिकल्टीज होती है ना, जैसे 10-10:30 बजे जब आप थक जाते हो और फिर भी आपका होमवर्क रह जाता है, ऐसी थ्योरम जिनको आपको याद करने में 10 पेज लिख के भरने पड़ते हैं, ये आपको वो थ्योरम्स याद कराने के लिए नहीं होता. ये इसके लिए होता है कि ये ट्रेन हो जाए लाइफ में जो भी आएगा, चाहे वो करना पड़े या वो किया हुआ हो, उसको झेलने के लिए. कई बार पेरेंट्स बोलते हैं मैम मेरे बच्चे का बैग बहुत भारी है, आप दीदी को बोल दीजिए उठा के ले जाइए. बैग को उठाने के लिए इधर से पहले इधर स्ट्रेंथ होनी ज्यादा जरूरी है. आप ये सब मानते हैं? विल पावर जिसको कहते हैं. बैग इधर इतना भारी नहीं लगेगा जितना इधर इतना भारी लगता है. तो अगर बच्चे की विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि 1 फ्लोर ही तो है, ले जाता हूँ, जिस दिन वो ये करने लग जाएगा ना, उस दिन वो लाइफ में बहुत सारी चीजों के पीछे नहीं हटेगा. तो ये जो चीजें होती है ना स्कूल में, छोटी छोटी चीजें, बैग भारी हो गया, मैम आज तो स्केटिंग बैग भी था, मैम आज तो ये भी था, मेरा बच्चा प्रॉप भूल के आ गया, ये जो भी चीजें होती हैं ये होती ही इसलिए ताकि आपको रियल वर्ल्ड के लिए तैयार किया जाए. स्कूल इज जस्ट वो बोलते हैं ना एग्जाम में पेपर में तो कुछ और ही आया जो बुक में नहीं था, तो वो इसीलिए होता है. स्कूल में आपको जितने इमोशंस आपके अंदर से इन्वोक किए जाते हैं ना, वो इसलिए इन्वोक किए जाते हैं ताकि बाद में आपको याद रहे कि ये इस जगह यूज करने को. जैसे वो हम किचन में बोलते हैं ना कि हल्दी और मिर्च और नमक हर सब्जी में डलता है ना, पर किस मात्रा में
कब तड़के से पहले कब तड़के के बाद, ये तभी पता चलता है जब आप उनको हैंडल करना सीख जाते हैं। तो चीज़ों को हैंडल करना इमोशनली फिजिकली हम सिखाते हैं, बाकी लाइफ गोज ऑन, राइट। शाकलाका बूम मूवी बहुत ज़्यादा बोल तो नहीं, नींद तो नहीं आ रही किसी को। मुझे देखो सिर्फ टाइम किल करना है। आई हैव टू टेल यू फ्यू थिंग्स एंड आई हैव टू किल द टाइम सो दैट द किड्स कम आउट। एंड अच्छा हाँ, प्लीज एक चीज़ बहुत मैं फेस कर रही हूँ, गर्ल्स जो हैं वो बहुत कलरफुल या नॉन स्कूली रबर बैंड्स लगाकर स्कूल में आ रहे हैं, इवन आफ्टर राइटिंग इन द एल्मनाइज। प्लीज टेक स्कूल वेरी सीरियसली, है ना। आज इसकी गीली पड़ी थी यूनिफॉर्म, हमने भेजी नहीं, आज इसने शूज नहीं पहने। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हम ही एक्चुअली बहुत कैजुअल हो चुके हैं। आई रिमेंबर माय डैड, हम सुबह लाइट नहीं होती थी और कभी अगर कुछ प्रेस नहीं होता था तो मैंने पहली बार उनको देखा पतीले में गर्म पानी करके, वो पतीला गर्म पानी का मेरे स्कर्ट पे मारते हुए। तो मैंने उनको जो बोला कि इट्स ओके, एक दिन बोल देंगे, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि अगर इट्स ओके इतनी इजीली आ गया ना तो लाइफ में फिर सब कुछ इट्स ओके हो जाएगा। जो कि ना, एंड आई वाज 6th स्टैंडर्ड में थी शायद उस टाइम में, जो कि मैंने उनसे सीखा है इट्स ओके होना चाहिए लाइफ में, पर शुरुआत में नहीं होना चाहिए। तो कुछ जो पेरेंट्स हैं वो वेडनेसडे वाले दिन ब्लू सॉक्स भेज देते हैं, वो गीली थी, मिल नहीं रही थी, वो बच्चे का यूनिफॉर्म है वो आपका। मतलब जस्ट बी लिटिल प्रोफेशनल, फॉर्मल, जैसे आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो ना, ऐसे ही हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। हमारा बच्चा, आप घर पहुंचोगे ना, आप रात के 8 बजे पहुंचो, आपका बच्चा आपको बुरी हालत में मिलेगा, बोले नहाया नहीं सुबह से, क्या किया था, गुस्सा आता है मदर। तो सोचो हम भी सुबह स्कूल में जाते हैं, कौन से कलर का रेड कलर का बैंड लगा के आ गए, क्यों है? इट्स इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन आल्सो टू टीच। बच्चे बोलते हैं, गर्ल्स बोलती हैं कि मुझे नेल पेंट लगा दो, मुझे ये लगा दो, मैम कुछ नहीं बोलती। आप बच्चे को बोलो, अगर मैम नहीं बोलेगी तो आपको नहीं पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, राइट? टीच देम, टेल देम टू बी प्रोफेशनल, बी डिसिप्लिन, एंड प्लीज द कलर रबर बैंड्स, द क्लिप्स and the socks, the shoes, don't give up so easily on them. Don't give up so easily on them. Yes, please guide and discipline your child. हमारे पास 6 घंटे होते हैं, उन 6 घंटों में हमको बहुत कुछ सिखाना होता है, बहुत कुछ। कई बार अगर हम चूक भी जाएं तो we expect you to have to inculcate such values in children, in values. आजकल टीचर्स के भी कई बार पेरेंट्स ही ऐसे हो जाते हैं, तो हम अगर 20 साल बाद मैं कभी किसी बच्चे को बाजार में मिलूंगी तो मुझे फख्र करना है कि मैं एक टीचर थी, और वो फख्र मुझे वो बच्चा कराएगा जो मुझसे 20 साल बाद कभी कहीं बाजार या मॉल में मिलेगा, isn't it? और वो 20 साल तक जो आप उसमें डालेंगे वो मुझे वो 2 मिनट में दिखाएगा। जैसे आज अगर मैं अपने होम टाउन जाती हूँ और मैं मेरे टीचर्स को मैं स्पेशली घर पे मिलने जाती हूँ, तो उनको ऐसा लगता है ना कि अरे हम टीचर रिटायर हुए थे। तो अगर मैं भी इस खुशी से रिटायर होना चाहूँ, या मेरे बाकी जितने भी कलीग्स हैं, वो तब होंगे जब आप भी अपने टीचर्स को मिलकर उनको इतना थैंक यू बोलेंगे, मैं यहाँ हूँ, मैं ऐसा हूँ, आप कैसे हो, आप तो बदल गए, आप तो ऐसे हो गए, आप तो वैसे हो गए। वो एक्साइटमेंट, वो प्यार तभी आ पाएगा जब आप अपने बच्चे में डालेंगे, जब आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसा नहीं होता, मैम इज नेवर रॉन्ग। आप मैम से पूछना, अच्छा मैं मैम से बात करूँगी, कुछ हुआ होगा, देयर मस्ट बी सम रीजन। ऐसे एक बार मेरी बच्ची ने बोला था, मुझे बाहर खड़ा कर दिया मैम ने। मतलब बहुत अच्छी बात है, क्या किया था ये बताओ? कुछ भी नहीं किया था, मैं तो खड़ी होकर विश कर रही थी मैम को। मैंने कहा वाओ, आप खड़े होकर विश कर रहे थे, मैम को मैंने बाहर निकाल दिया। I kept it in my mind. I asked her the PTM कि मैम अगर डिसिप्लिन की इशू है आप मुझे बताइए, पढ़ाई तो मैं देख लूंगी, आपको मेरा बच्चा कहीं ऐसा लगता है जो मुझे गाइड कर रहा है? उन्होंने वो इंसिडेंट याद किया, उन्होंने बोला नहीं बातें कर रहे थे, मैं क्लास में 5 मिनट से खड़ी थी, कोई मुझे देख ही नहीं रहा था। तो I told children to stand, not outside of the class, but हाँ, they were standing here.